हाय दोस्तों, कैसे हो? Hope you are all feeling well. Well, like before, I have come again in your service with some words as you can see on register. So, of course, we have been learning for the past two or couple of weeks, and sometimes we are learning words, sometimes rules of grammar. So, all these things that I am on regularly updating on this channel uh, are very lucrative in terms of exam. Okay, so do not take them lightly. Just note them somewhere. So, like before, let us study again. So, before I begin, I would love to take the name of God, the most benevolent and merciful. Well, the very first word is, as you can see, aphasia. Aphasia, what does it mean? The loss of the ability to understand or produce speech because of brain damage. When brain damage because of any accident or because of some psychological disorder, then we have aphasia, means we are unable to understand. We lose the ability of recognition, यानी जो हमारे अंदर शिनाख्त की जो वो क़ुव्वत रहती है या फिर परखने की जो है वो सलाहियत ख़त्म हो जाती है। वो कब ऐसा होता है? जब हमारे ब्रेन डैमेज हो जाता है, उसी को कहते हैं बोली बंद होना। एंड दिस हैपेंस स्पेशली इन ओल्ड एज, as you have seen that when the people who are on bed, when they are going to die, when they are old, so they are unable to speak. Okay, they are unable to speak means they have aphasia. They have aphasia or they lost the ability to understand. Even they cannot recognize their own son, their own daughter, their own grandchildren. This happens especially in old age. Okay, so this is what we call aphasia. Okay, aphasia. Now I have used an example. My dad was bedridden. At the time of his death, he had aphasia. Okay. So like this you can use the word. Now see the next word. Apiary. या अपायरी भी बोलते हैं इसको, अपायरी. ओके, व्हाट डज इट मीन? ए प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी ए प्लेस वेयर बीज आर कल्चर्ड, बीज आर रियर्ड, बीज आर ग्रोन अप, जहाँ मधुमक्खियों का पालन हो, या ऐसे स्थान को हम क्या कहते हैं? अपायरी कहते हैं. I have a small apiary at my orchard. Orchard means the garden of fruits, यानी फलों का जो बागीचा उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं. वेयर यू कैन सी टू लार्ज बी हाइव्स इन द ट्री, यानी छोटा सा एक बागीचा है फूलों का, फलों का घर पे. उसमें जो है दो छत्ते शहद मक्खी के लगे हुए हैं जो कि हैंग कर रहे हैं. तो आई कैन से दैट इट इज़ अपायरी, ए स्मॉल कल्चर और कल्टिवेशन ऑफ बीज और हनी. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड अपायरी. ओके, मधुमक्खियों का पालन का स्थान, द प्लेस वेयर दे आर रियर्ड इन द बॉक्सेस और मे बी ऑन द ट्रीज. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल अपायरी. ओके, सी द नेक्स्ट वर्ड, एपोस्टैसी. एपोस्टैसी, you can see the spelling, APOSTASY, apostasy. What does it mean? The state of having rejected, the state of having rejected your religion, beliefs, or your political party or any cause. Okay, apostasy means, for example, if you are believing in Christianity, but because of some certain rule and regulation, or maybe you have heard any story, and because of that you have made your mind to change your Christianity, your religion, into others. तो दिस स्टेट इज़ नोन एज एपोस्टैसी, यानी जब धर्म परिवर्तन होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? एपोस्टैसी कहते हैं. या यू आर चेंजिंग योर पॉलिटिकल पार्टी. लेट्स से यू आर द मेंबर ऑफ बीजेपी, बट नाउ यू आर क्विटिंग बीजेपी एंड गोइंग टू इंटर इनटू कांग्रेस और वट एवर पार्टी यू बिलीव इन और यू लाइक. तो दिस ट्रांजिशन, दिस चेंजेस, दिस स्विचिंग विल बी नोन एज एपोस्टैसी. एक धर्म से दूसरे धर्म में जो परिवर्तन, जिसको कन्वर्ट कहते हैं, उसको हम एपोस्टैसी कहते हैं. ये पॉलिटिकल पार्टी भी हो सकती है, ये रिलीजन भी हो सकता है, या कोई कॉज भी हो सकता है. ओके, तो दिस इज़ हाउ यू कैन यूज़ द वर्ड. लाइक आई हैव यूज्ड एन एग्जांपल, वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वेयर यंग जनरेशंस ओके प्रैक्टिस अपोस्टेसी वेरी ऑफन, यानी हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है. और यू कैन सी दैट जो यंग जनरेशन है वो अपोस्टेसी को प्रैक्टिस कर रही है. मीन्स दे बिलीव टोटली इन साइंस, देयर फैथ, देयर कॉन्फिडेंस, देयर ट्रस्ट इन साइंस इज़ मच मोर फर्म और डिटरमिन्ड और वेरी स्ट्रांग. सो दे हैव स्टॉप्ड बिलीविंग इन रिलीजन. तो ये अपोस्टेसी नई जनरेशन कहीं ना कहीं इसको जो है प्रैक्टिस कर रही है. लाइक दिस यू कैन यूज़ द वर्ड. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड,
apostate. Apostate is coming from the same word apostasy. Apostasy is a noun. What type of noun? It is noun, abstract noun. Okay. Now see, apostate. What does it mean? Means one who abandons long held religious और पॉलिटिकल कन्विक्शंस ओके, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिनों से किसी धर्म को फॉलो कर रहा हो, लेकिन किसी रीजंस के कारण या किसी पार्टी में वो हो, लेकिन किसी रीज़न के कारण या किसी वजह से वो जो है उसको त्याग दे, छोड़ दे, तो ऐसे व्यक्ति को अपोस्टेट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू वेर क्रिश्चियंस, ओके, and because of some certain rule and regulation, or maybe because of some certain issues, you left this Christianity and you followed Hinduism, so now you will be called apostate, because the original religion that you had in the previous, you have left and you have gone from there to another religion. So this transition, this period or this act is known as apostasy, and the person who does it is known as apostate. Okay, यानी convert जिसको कहते हैं. Now see the example. These are apostate, they left their religion recently. यानी ये लोग जो है क्या अपोस्टेट, अभी इन लोगों ने हाल ही में अपना धर्म या अपना धर्म को, अपने मज़हब को त्याग दिया किसी रीज़न से या किसी वजह से. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड अपालिंग. APPALLING. ओके, व्हाट डज इट मीन? इट इज़ एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच. काजिंग शॉक और डिसमे, यानी भय उत्पन्न करने वाला या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाओ, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओ, यानी एनीथिंग दैट causes you surprise, anything that keeps you in difficulty, anything that surprises you, इसी को हम क्या कहते हैं? appalling. Okay, causing shock or dismay. Like I have used in example, the burning of company was appalling as myriad lives were lost. Myriad means many, numberless. Like recently I think there was explosion, as I saw in the news. Exactly I don't know the name of the place, but very recently means this news of yesterday, that in a company there was a huge explosion and there were lots of gases and smokes were coming, lots of lives were lost. So this was disaster that took place. So it was appalling because it took lots of lives. So anything that is dangerous, that is fatal, that is heinous, that is life threatening is known as appalling. Like you can say, the storm that took place was appalling because it uprooted lots of strong trees. Or you can say the death of my father was appalling to my family. Why? Because it was tough for us to digest. He was bread earner. So like this you can use the word appalling. Okay. Now see the next word, applause. Applause. What is it? It's spelling APPLAUSE. Double PLAUSE. Applause. It is noun according to part of speech. What does it mean? A demonstration of approval by clapping the hands together. Like you will see that when our player hit century, hit sixes or fours, okay, so all the spectators start clapping their hands out of praise. Okay, so it happens in cricket as well. Or if someone scores a good mark in exam, so every other student and colleague, or you can say classmate, start clapping in his or her respect. तो applause माने होते प्रशंसा, वाहवाही, शाबाशी. Okay, like I have used an example. Indian team got applause after winning trophy. When Indian team won trophy, from all over the world, from all over the country, from all over the state, everyone started applauding Indian team. ओके, तो क्लैपिंग से या फिर जो है वाहवाही करना, शाबाशी देना. ओके, पैट द, और यू कैन से पैट द बैक, यानी पीठ थपथपाना, आउट ऑफ प्रेज, आउट ऑफ एडमायरेशन, बिकॉज ऑफ गुड परफॉर्मेंस. ओके, दिस इज हाउ यू कैन यूज द वर्ड. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, ब्रेवरी. Bravery, bravery. It is different. There is also a word bravery. BRAV. That there is V. Bravery means boldness, बहादुरी. But here it is different. तो it can be called homophonic word. जैसा कि previous video में आपने पढ़ा था homophone क्या होता है. तो homophone means a word that has similar sound. Okay, similar sound but डिफरेंट इन स्पेलिंग एंड मीनिंग. जिसका साउंड सिमिलर तो हो लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग में डिफरेंस है, उसको हम होमोफोन कह देते हैं. प्रीवियस स्टडी हमने किया है इसकी जो है. यू कैन सी द लेक्चर, देयर इज़ अवेलेबल ऑन द यूट्यूब. सो ब्रेवरी, ब्रेवरी. ओके, बट दिस ब्रेवरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट वन.
I'm not talking about the bravery, the boldness. I'm talking about different. Okay, you can see here a factory where beers made, जहाँ पे शराब वगैरह बनाई जाती है उसको हम भट्टी कहते हैं, शराब की भट्टी. The place where beer is cooked or boiled इन द कॉल्ड्रन, इन ए ह्यूज पॉट, किसी कढ़ाई में या जैसे भी हो, इसी को हम क्या कहते हैं, शराब की भट्टी कहते हैं. नाउ यू कैन सी एन एग्जाम्पल, ऑल इलीगली रन ब्रेवरीज वे आर शट बाय द गवर्नमेंट, यानी जितने भी गैर कानूनी तरीके से दैट वे आर नॉट रजिस्टर्ड, दोज ब्रेवरीज वे आर शट बाय द गवर्नमेंट, यानी वो सारे जो है शराब की भट्टियाँ बंद कर दी गई जो गलत तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनली जो चलाई जा रही थी. नाउ सी द नेक्स्ट वर्ड, concubinage. How will you pronounce concubinage? Concubinage. Okay, what does it mean? Living together as spouses. What do you mean by spouses? Spouses is a common word that is used for both husband and wife. Okay, it is a common word like consort. It is a common. It can be either wife or either husband. So it is used for both. तो लिविंग टुगेदर एज स्पाउसेस विदाउट बीइंग लीगली मैरिड, यानी कह सकते हो कि एक साथ पति पत्नी जैसे रहना की तरह रहना बिना शादी किए. ओके, सो दिस इज़ वेरी कॉमन टुडे. Couples are living together, especially this practice is made in European country. It also happens in our country as well, when two couples who are dating each other living together exactly like husband and wife, but they are not legally married or they are not having in marital relationship, but they are dating, sleeping together, sharing their dining table and bed together, and every act they are doing exactly like two couples who are married legally. So this is what we call concubinage. Okay, this is what we call concubinage. तो concubinage जो है इसी को कहते हैं. Now see an example, concubinage is quite common now. It is quite common. You can see in this era where people are dating each other so they can live together without marrying. So this is what we call concubinage. Now see the next word, complacent. Complacent, what does it mean? Complacent, it is adjective according to part of speech. What does it mean? To be satisfied with yourself. Atma santusti, self satisfaction. Do not be complacent in your learning, just continue to learn. This will make you great, a great man. Okay, and this is true. When you feel satisfied with your learning, that yes, I have learned, now no need to learn anymore, this is your bigger mistake, this is your blunder mistake. Don't do this, don't practice this. Okay, don't have complacency in your learning. Why? Because it should be like thirst. Your study, your learning should be like a thirst that can never ever be quenched. यानी ये प्यास कभी नहीं बुझनी चाहिए, अदरवाइज योर एजुकेशन, योर नॉलेज विल बी लिमिटेड, विल बी कन्फाइंड. सो टू हैव परफेक्शन, टू हैव वेरी full fledged knowledge, you need to learn and learn and learn. This is why there is a proverb, learn from cradle to grave, यानी तालीम हासिल करो from the time you were born till the time you die. In between you have to spend time only on education, on learning good things. Okay, so this is what our life is all about. So never ever think that you have learned a lot and now you need not to learn. In life we start learning from the time of we born till we die. Okay, in mother's lap, in different ways. Okay, so we always learning till we go to the final destination. तो डू नॉट बी कंप्लासेंट इन योर लर्निंग, कभी नहीं संतुष्ट होइए अपनी लर्निंग में कि यस आई हैव लर्न, आई नीड नॉट एनी मोर, आई नीड नॉट एनी टीचर, आई नीड नॉट एनी बुक, दैट्स ऑल, आई एम सेल्फ सफिशिएंट. दैट इज़ योर ब्लंडर मिस्टेक, दिस इज़ वेयर यू आर मेकिंग मिस्टेक. तो इसी को हम कंप्लासेंट कहते हैं, यानी आत्मसंतुष्टि. आगे देखिए, डिस्पोंडेंसी. व्हाट डज इट मीन? डिस्पोंडेंसी, इट इज़ नाउन अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ स्पीच. इट मीन्स फीलिंग डाउनकास्ट एंड डिसहार्टेंड एंड होपलेस, यानी निराशा फील करना, या कह सकते हो पेसिमिज्म जिसको कहते हैं, निराशा, यानी यू आर फीलिंग होपलेसनेस, आप निराशा फील कर रहे हो कि नथिंग विल हैपन नाउ. Okay, so this kind of feeling if takes place, this is what we call despondency. So despondency is synonymous to pessimism, nirashavad, but this despondency should not place in student. Okay, because we are student, we are learning,
day by day we need to be positive. We need to be positive, and this is how we can achieve our target. If we are pessimistic or we have despondency, then we can't learn, and negativity will knock us down. So never let it grow, never let it take place in your mind. Just increase, go on with positive thought, and this is how you can get your journey. Nothing is impossible in this world. Like you can remember the quote of William Shakespeare. He has said beautifully that a man is the product of his mind. A man is the product of his mind. What he thinks is become, या ही becomes. ओके, यानी एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, एक ह्यूमन बीइंग के लिए कहा उन्होंने कि इंसान जो है अपने माइंड का प्रोडक्ट होता है, जो वो सोचता है वो बन जाता है. दिस इज़ क्वाइट ट्रू. यू कैन बी IAS, यू कैन बी advocate, you can be whatever you want. It's up to you. Even you can be a big thief, एक आप चोर भी बन सकते हो. You can be a criminal as well. It depends upon your activity, your performance. Okay, so if you have pessimistic attitude, then of course you will never ever study, you will never ever do good work, because you will think that I can't do anything, I cannot get success. So that is blunder mistake. Therefore you need to grow with positive thought, and you have to increase your knowledge, your target, and this is how things will come in your favor. Okay, so never let despondency take place in you. Okay, so hope you have got this word. Now see the next word, desert. What does it mean? Desert, DESSERT, desert. Here you have to take care that here is double S, not single S. When there is single S, then it is all about the desert. A very big place, very vast area where there is only sand and lack of water, there is not tree. यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे रेत हो ज़्यादा, जिसको हम रेगिस्तान कहते हैं. This will be only when there is single S, but here is double S. What does it mean? Desert means a dish served at the last course of meal. यानी खाना जब हम लोग खाते हैं, where we are, whether we are in marriage, at home, wherever we are invited. Okay, so you will see that this is tradition, this is common thing, that after food there should be something sweet in the form of fruit, in the form of something like cheese or pudding, खीर वगैरह. यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वहाँ पे मीठा होता है. आप शादी में जाओ तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, या फिर आप किसी को इनवाइट करते हो तो फ्रूट स्लाइसेस के रूप में आप रखते हो. दैट इज़ व्हाट वी कॉल डेजर्ट. इट इज़ गुड आल्सो बिकॉज it gives us a better digestion. Okay, after food, once you have consumed your meal, you need to eat something sweet that will keep your digesting power intact. Your digestion will be good. So this is what we call dessert. इसको मिठाई भी कह सकते हैं, मीठा भी कह सकते हैं. ये कुछ भी हो सकता है, फ्रूट्स भी होता है, या कोई डिलीशियस भी हो सकता है, या कोई पडिंग वगैरह. होप यू हैव गॉट दिस वर्ड. Now I have used an example. After meal you must eat something sweet, dessert. है ना? It will keep your digestion good. Yeah, well. Okay. Now see the next word, destitute. Destitute. What does it mean? A person without money, food and other things necessary for life. यानी जो जीवन के लिए आवश्यक चीज़ें हैं, वो चीज़ें किसी के पास ना हो. What are the necessities of life? Basically we need food. We need food. And how can we manage food? Of course money is required for that. If we don't have money, how can we buy, how can we purchase odds and ends that are the part of our daily life, that are the part of our kitchen? Let's say vegetable, potato, tomato, these are common thing that we need on regular basis to cook food or to cook vegetables. Okay, so if we are running out of money, if we are cash strapped, how can I manage, or how can we manage? So if we are in that state, if we are in that position, तो दिस इज़ वेयर वी कैन यूज़ दिस वर्ड डेस्टिट्यूड. यहीं पे यह वर्ड यूज़ होता है. यानी कह सकते हो निर्धनता, गुर्बत, पावर्टी. ओके, दोज हु वेयर डेस्टिट्यूट मस्ट बी सपोर्टेड. यानी जो गरीब है उनकी मदद की जाए, जो ऐसी स्थिति में जी रहे हैं. लाइक यू कैन से कोविड-19 पुश्ड अस टूवर्ड्स डेस्टिट्यूड. यानी जो इसने पुश कर दिया हमको, यानी ढकेल दिया किसकी तरफ? डेस्टिट्यूड की तरफ. ओके, बिकॉज एवरीथिंग वॉज शट, सो बिकॉज ऑफ दैट देयर वॉज लैक ऑफ वर्क, लैक ऑफ मनी एंड ऑल दिस थिंग. तो डेस्टिट्यूड इसी को कहते हैं, पावर्टी को कहते हैं. नाउ सी द फाइनल वर्ड, एंड इट इज़ अ लिटिल बिट पॉलिटिकल इन नेचर. इसकी जो प्रकृति है, थोड़ा सा ये नेचर इसका जो है ये पॉलिटिकल है. ये पॉलिटिक्स में ज़्यादा यूज़ होता है ये वर्ड. यू कैन सी न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविज़न,
by the mouth, from the mouth of politicians, when they are making promises that if my government is formed, if my government come to power, we will do this, we will do that. Though they never ever fulfill, but they make promises like this when they are rallying, when they are having parties, or when they are having programs. Okay, so you can see this word so often used in politics. Okay, manifesto. Manifesto means party explains their beliefs and say what they will do if they win or दे आर वोटेड टू पावर, यानी जो इलेक्शन वो जीतेंगे तो वो क्या क्या करेंगे आपके लिए, वो जो एक लिस्ट निकलती है कि वी विल इम्प्रूव एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल वर्क ऑन इंडस्ट्री, वी विल वर्क ऑन टेक्सटाइल फील्ड, वी विल वर्क ऑन स्पोर्ट फील्ड. तो दे हैव ए लॉन्ग लिस्ट, they are counting before the audience. This is how they woo us. Woo means the uksana, so that we can vote them and they can win. Once they win, whatever what happens, they forget everything. Okay, so they will meet you again when the election is nearing. So this is the habit of politician. तो मैनिफेस्टो मीन्स होता है घोषणा पत्र, जिसमें सारी चीज़ें डिक्लेयर्ड होती हैं कि दिस गवर्नमेंट विल डू दिस गवर्नमेंट विल डू दैट once it comes to power. This is what we call manifesto. So you can use in your example, majority of the time the manifesto declared by the government, declared by the particular party, is fake, because whatever it says is not being executed, is not being implemented. It is only on paper but never ever materialized. So this is how you can use the word manifesto. Okay, so hope you have got this word. So these were the words that we shared, that we learned together, and I hope that you have enjoyed this a lot. So once again I will request you, like I have been requesting you for the last few days, that you must take them seriously, these words that I am sharing with you. Okay, these are very lucrative in terms of exam and also for your speaking. So note them down somewhere if you have notes book. Okay, they will help you a lot. So guys, thank you for your time, and please do not forget to subscribe my channel and give your motivation and your feedback, that matters a lot. So keep enjoying this lecture and keep enjoying life. Thanks.